इट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास। हम लोग थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैंने क्लास किया था ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। इट्स अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। इट्स अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी and the mix of debt and equity varies from company to company, situation to situation, project to project, वो vary करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बहुत सारी थ्योरीज है। 4 थ्योरी: नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है मोदी गिलियानी, मिलर एंड मोदी गिलियानी अप्रोच, MM अप्रोच जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। अब तक हम लोगों को समझ में आया कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे कॉस्ट को, हमारे एक्सपेंसेस को इफेक्ट करता है। इसको इफेक्ट करता है, कॉस्ट को, एक्सपेंसेस। हर कोई चाहता है कि उसका कॉस्ट क्या हो, कम से कम। अगर कॉस्ट कम होगा प्रॉफिट्स बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ द कंपनी ज्यादा होगा। वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू बेनिफिट द शेयर होल्डर्स, हाउ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो इनकम अप्रोच हो या ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो, तो इनकम में क्या है, इनकम अप्रोच में आप नेट इनकम कहते हैं। नेट इनकम का मतलब, नेट इनकम का मतलब सारा खर्चा एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सारा इनकम एडजस्टमेंट्स के बाद। जब आप नेट ऑपरेटिंग कह रहे हैं तो इसमें हम लोग अदर इनकम्स को, अदर एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते। कैन यू पॉइंट? अब एक चीज और देखिए, इसमें कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या चीजें थी कि जैसे जैसे कंपनी में डेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंपनी में जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि डेट बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, है ना। कंपनी का लिवरेज बढ़ता जाएगा। डेट बढ़ने से रिस्क क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपको इनकम हो ना हो, आपके पास रेवेन्यू आए ना आए, लेकिन एक फिक्स्ड चार्ज तो आपको हमेशा पे करना ही पड़ेगा। यू नीड टू ऑलवेज पे इट। गेटिंग द पॉइंट? ये हमेशा आपको पे करना। कुछ कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि डेट के बढ़ने से या घटने से वैल्यू ऑफ द कंपनी पे कोई असर नहीं होता। कुछ का कहना है कि जब डेट चेंज करेगा तो वैल्यू ऑफ द कंपनी भी उसके हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा। यस और नो? तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के सहारे इन सारी चीजों को समझा था ना। एस का मतलब क्या था? एस का मतलब था वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वेरी गुड। और वी का मतलब क्या था? सब भूल गए? एक बार रिवाइज करो जल्दी, आगे बढ़ने से पहले, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। एस माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा? अगर, सॉरी, वी माइनस एस, एस बराबर क्या होगा? वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट। चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा ट्रेडिशनल थ्योरी अप्रोच।
traditional theory approach. देखिए, it is accepted by all. It is accepted by all that the use of debt will increase the value of the firm, यानी कि V को बढ़ा देगा. V का मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म. आप डेट का जितना ज्यादा यूज करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म उतना ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाएंगे. एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. And reduce the cost of capital, full stop. Therefore, the optimum capital structure is the point at which the value of the firm is highest and cost of capital is at its lowest. And the cost of capital is at its lowest, full stop. Lowest, full stop. Practically, this approach includes all the grounds between the NI approach and the NOI approach, full stop. In simple words, it may be referred to as an intermediate approach. It may be referred to as an intermediate approach. Full stop. Paragraph change कीजिएगा. The traditional approach explains that up to a certain point, comma, debt equity mix will cause the market value of the firm
to rise and the cost of capital to decline. And the cost of capital to decline. Full stop. But after attaining A double T A I and ING, but after attaining the optimum level, comma, any additional debt will cause to decrease the market value, and increase the cost of capital. Full stop. Increase the cost of capital. Full stop. In other words, after attaining the optimum level, comma, any additional debt taken will offset the use of cheaper debt capital. Will offset, OFFSET, will offset the use of cheaper debt comma, as the average cost of capital will increase, with a corresponding increase in the average cost of debt. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, नीचे लिखिएगा the basic proposition of this approach are point number 8, the cost of debt capital bracket में KD debt bracket में KD remains constant up to a certain point and then starts to rise. Point number B, the cost of equity capital remains constant
or rises slowly up to a certain point and then rises rapidly. Point number C. The average cost of capital decreases up to a certain level, comma, remains constant thereafter and finally tends to rise after attaining certain level. एक पढ़ के देखिए, कुछ बता पाओ तो फिर समझें। बहुत इंटरेस्टिंग है और हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है, इसे ध्यान से पढ़ना। फोटो उसका नहीं था, तो अपने बैचमेट का ही फोटो लेके साथ के एग्जाम दिया। हम चेहरा देखे पहचान गए, ये तो बीबीए बैचमेट का है, दोनों ही बैच का है। उसका क्या करना है, बाहर कर दिया, एकदम एकदम कॉपी लेके बाहर, कॉपी कैंसिल कीजिए, जो फोटो दिया उसको भी। हाँ हाँ, दोनों को कॉपी कैंसिल करके बाहर कीजिए। कौन से रूम का है ये, कौन से रूम का है? एकदम एकदम कैंसिल करिए, दोनों का कॉपी लेके कैंसिल कर दीजिए। बाबू कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझी तो थोड़ा बताओ मुझे। बाकी लोग कहाँ गए, काहे नहीं आ रहा है? चला गया।
अटेंड ही नहीं करता बहुत बच्चा सर। सर इसमें कह रहा है, बोलो बोलो। सर इसमें कह रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेट और इक्विटी का मिक्स होता है तो फिर जाके मार्केट का वैल्यू इंक्रीज करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करता है। ठीक है, सर ये कारण है। और सर हाँ बताओ। ठीक है, बैठ जाओ, बता दी बॉयज। ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है बाबू, वो जो नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इन दोनों के जो बीच में कमी है उसको पाटने की कोशिश करता है ना, उसको ब्रिज करने की कोशिश करता है, उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, राइट। या आप यूं कह सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इसकी कमियों को दूर करता है। कमियों को क्या करता है? दूर करता है। अब तक तो इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं रह गई है कि जैसे जैसे आप किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के कंपोनेंट को बढ़ाएंगे, किसके कंपोनेंट को बढ़ाएंगे? डेट के कंपोनेंट को, तो वैल्यू ऑफ द फर्म तो बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा? कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। क्यों? क्योंकि डेट रेज करना ज्यादा सस्ता है, डेट के थ्रू पैसा रेज करना ज्यादा सस्ता है, ठीक है। लेकिन क्या ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है? आप डेट बढ़ाते जाइएगा, आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, कॉस्ट हमेशा कम होता जाएगा। क्या हर बढ़ते हुए डेट के साथ वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा? द आंसर इज नो। एक ऑप्टिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिमम पॉइंट। एक लेवल है जहां तक पहुंचने के बाद अगर आप डेट के कंपोनेंट को बढ़ाते हैं, सुनना ध्यान से, उस लेवल को अचीव करने के बाद भी अगर आप डेट के कंपोनेंट को बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा नहीं, फिर वैल्यू ऑफ द फर्म घटना शुरू हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जो मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो क्या होगा? वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब आखिर ऐसा होता क्यों है? कायदे से अगर डेट मैं बढ़ा रहा हूं तो डेट बढ़ाने से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? घटना ही चाहिए। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहुंच गए, उस मिक्स को आपने अचीव कर लिया, डेट और इक्विटी को, उसके बाद अगर आपने डेट को बढ़ाया तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ता नहीं है, वो घटता है, और इसके विपरीत कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। क्यों आखिर ऐसा होता है? अब देखिए, एकदम लॉजिकली सुनो एक चीज। मान लीजिए आप क्लास में 12 स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं और आप सभी लोग मुझे, मतलब आप लेंडर, आप कौन है? लेंडर। मैं कौन हूं? बोरोवर। मुझे लोन चाहिए। मैंने क्या किया, आप में से जो 12 लोग हैं उनमें से 8 लोगों से मैं लोन लेके बैठा हूं। बात समझना, 8 लोगों से मैंने लोन लेके बिजनेस में पैसा लगाया। अब क्या हो रहा है? मुझे और पैसे की जरूरत है। तो मैं जब 9वें व्यक्ति के पास जाऊंगा, आप में से मैं 9वें स्टूडेंट के पास जब आऊंगा कि भाई मुझे लोन दे दीजिए, तो आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे ना। आप तो कहेंगे भैया ये तो 8 लोग से लोन लेके बैठा हुआ है, अब हमसे भी लोन लेने के लिए आ गए। सबका तो पैसा डूबा ही हुआ, मेरा भी पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए आप लोन मुझे देंगे, लेकिन बाकियों के रिस्पेक्ट में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे? कम। कम क्यों करेंगे? ज्यादा करेंगे ना, क्योंकि आप जब मुझे देंगे, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी लिवरेज इतना ज्यादा है कि अब आपका पैसा मेरे बिजनेस में लग तो रहा है, लेकिन रिस्क भी क्या हो गया? बढ़ गया। डेट बढ़ने के साथ रिस्क भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप मुझे डेट देंगे, लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो 8 लोगों से पहले ही लोन लेके रखा है,
चलिए आपकी कंपनी बड़ी है, मेरा आपका साख अच्छा है, हम आपको जान रहे हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो हम आपसे ज्यादा लेंगे। बात समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, डेट तो मिला लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट पहले से बढ़ गया। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का होगा, वो क्या घटने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बढ़ेगा। अब 6 महीने के बाद फिर 10वें के पास पहुंच गए, भैया तुम भी लोन दे दो, समझ रहे हैं? अब 10वां बोले यार कि मामला गड़बड़ है ना, कंपनी गायब होने वाली, सबका पैसा लेके रफू चक्कर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि चलिए ठीक है, मना कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, ले लीजिए लोन। तो आप कहेंगे कि भाई जो पिछले वाले से आपने लोन लिया उससे हम ज्यादा पे देंगे, इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे फिर आप, तो डेट तो मिल गया हमको, लेकिन जो न्यू डेट आया वो पहले से क्या हो गया, महंगा हो गया। तो ओवरऑल जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो पहले से और बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो बिजनेस का मालिक है, उसको तो डिविडेंड चाहिए। क्या चाहिए उसको, डिविडेंड। वो तो देख रहा है भैया कंपनी लोन पे लोन लिए जा रही है, खतरा ज्यादा है कंपनी में, कंपनी में खतरा। तो जहां पे रिस्क बढ़ जाता है, जहां पे अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, वहां पे शेयर होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी क्या खोजता है, ज्यादा खोजता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उधर कॉस्ट ऑफ डेट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इधर साथ में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ना शुरू हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अब इसका इंपैक्ट क्या, वैल्यू ऑफ द फर्म घटना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेगा। एक्सपेंसेस क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेगा तो जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है, जो नेट प्रॉफिट्स है, वो कम हो जाएगा। तो जब नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अर्निंग पर शेयर कंपनी में कम हो जाएगा, और जब अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा तो मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कंपनी का वैल्यू बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। यही कह रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच। आई बात समझ में? इसमें बस यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, ये मान लिया गया, ये तय बात है कि अगर आपकी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट आप बढ़ाते जाएंगे तो विथ एवरी इंक्रीज इन डेट only up to a certain point, what you will find that the value of the firm is increasing on one side, but the overall cost of capital is falling, isn't it? It is an accepted fact, it is an established fact. But the question arises, can this process be continued on a never ending basis? The answer is no. Beyond a certain mix of debt and equity, what I said, beyond a certain mix of debt and equity, if the company is still willing to have some debt, is still willing to borrow money from the market, what will happen? The borrowers will be lending money now at a higher rate of interest, right? And once the borrowers are lending at a higher rate of interest, the cost of debt will increase. The cost of debt will increase. Now, this increase in cost of debt will push the average cost of capital, or the overall cost of capital for the company, on the higher side. Yes or no? Just contrary to this, the shareholders, who are the owners of the business and who want return from the business in the form of increased share prices and more dividends to them,
now will be fearing of the risk in the business because of increased debt. Right? They will be now having a fear of risk. Why will they be having a fear of risk? Because of increased debt. Because of what? Increased debt. Now, since they are knowing that there is more debt, and more debt means more risk, they will be requiring more dividends. They'll be requiring more dividends. And this more dividends will increase the cost of equity. Will increase the cost of equity. Therefore, beyond a certain point, if the company is willing to raise money through debt, the average cost or the overall cost of capital of the business will be forced upwards because of pressure, not only by the increasing cost of debt, but also by the increasing cost of equity. Both the elements of cost will push the average cost or overall cost of business upwards. Now, what will happen? Now, if the overall cost of capital of the business increases, means the expenses of the business are going to increase. The expenses of the business are going to increase. Now, once the expenses of the business are going to increase, it will have its negative effect on the net profits. It will have its negative effect on the net profits. The net profit of the business will shrink. Will shrink. Shrink मतलब कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा net profit. And what will happen when the net profit shrinks? The net profit shrinking means lower EPS. Lower EPS. EPS stands for earning per share. And when the earning per share of any business falls, what will happen? It will reduce the market price of the shares. Now, when the market price of the shares reduces, the value of the firm will obviously fall down. Getting the point? This is what the traditional approach is all about. एक बार दोबारा से पढ़ के देख लो. क्वेश्चन लिखो तुम.
Earning before interest and tax. Interest and tax. उसके नीचे लिखना total value earning before interest and tax 30,000 लिख देना total value को काट दो capital structure 2 लाख उसके बाद नीचे लिखना up to rupees 1 lakh एक मिनट cost of equity up to rupees 1 lakh cost of equity up to rupees 1 lakh 15% एक लाख तक अगर इक्विटी कैपिटल है तो उसका कॉस्ट कितना हो रहा है 15%। उसके बाद नीचे लिखेगा कॉस्ट ऑफ डेट अप टू रुपीज 1 लाख 10%। कॉस्ट ऑफ डेट अप टू रुपीज 1 लाख 10%। फिर नीचे लिखेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिटवीन 1 लाख एंड रुपीज 1.5 लाख 18%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिटवीन रुपीज 1 लाख एंड 1.5 लाख 18%। अब नीचे लिखिएगा कॉस्ट ऑफ डेट बिटवीन 1 लाख एंड 1.5 लाख 12%। कॉस्ट ऑफ डेट बिटवीन 1 लाख एंड 1.5 लाख 12%। फिर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिटवीन 1.5 लाख एंड 2 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिटवीन 1.5 लाख एंड 2 लाख 20%। कॉस्ट ऑफ डेट बिटवीन 1.5 लाख एंड 2 लाख 15%। समझ गए? नीचे लिखना कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल and the value of the firm under each of the following alternative degrees of leverages. Under each of the following degrees of leverages. चलो बाकी बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना?
जो पढ़े समझ में आ गया?